Everyone, I guess the kind of speakers we had here, and especially our beloved Millet Man of India, I do not have much to say because he has covered the entire bandwidth in terms of why millet is important. And good thing for all of us is there is no doubt that we do not understand why millet is important. And so probably I'll be limiting my speech in terms of what is not said and probably what we have done as a part of working on the report. So let me again acknowledge this fact and to again our beloved Mr. Millet Man of India is as a consumer, as a Indian, we opportunity to kind of tap into. But in terms of what kind of work we have done, what is the pathway forward for next 10 years, those are the key background in which I, along with my team, FICCI, Mr. Joshi, who was leading the task force, the entire team was working. And this is a very functional report where we are not touching upon a lot of factors in terms of production and maybe the basic literature. This is a more of a functional report where we are talking about as a policy thing what all we have done and probably next 10 to 15 years what we can do. And few of the key facets of that policy implication where can we do something in production side of it. Of course, we in some way we have touched upon it. The another very important part was, do we have something to do in awareness creation? Yes, there is a long way to go. Then there was a lot of inputs came and we felt that there is a requirement of doing something in innovation part of it because and right from an entire value chain, production till processing and of course export and market development. And the last part was, do we have enough demand? While we understand the importance, are we able to create that demand? That demand may be domestic or international. We have few farmer friends here, so probably I'll try my Hindi as well. So जो किसान भाई भी यहाँ पे हैं और मेरे ख्याल से they are came from राजस्थान. तो एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए मिलेट्स हमारे लिए कोई नया नहीं है और जैसा मैंने सुना मिलेट्स हमारे कल्चर का पार्ट है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो एट ए डिफरेंट पार्ट बहुत सारे फेस्टिवल में मिलेट इज अ फूड तो हम मिलेट ही खाते हैं एंड दैट इज लिंक टू आवर समवे फेस्टिवल रिलीजन एंड काइंड ऑफ अ फूड तो एक बहुत ही इंग्रेन्ड फूड इकोसिस्टम का पार्ट है बट बिकॉज ऑफ जो भी हमारे पास चैलेंजेस थी इन टर्म्स ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी एन इशू वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट 2050 में खाना कहाँ से आएगा और थोड़ा सा मैं और एक थोड़ा ध्यान आप लोगों का खींचना चाहता हूँ आजकल जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट FTAs ट्रेड एग्रीमेंट्स सभी में फूड पहले आ रहा है तो आज से 5 साल पहले जब डिस्कशन हो रहा था तो फ्यूल फर्टिलाइजर पहले आते थे और फूड बाद में आता था आजकल सारे FTAs में फूड इज द फर्स्ट टॉपिक तो फूड इंपॉर्टेंट है 2050 में अभी हम लोग बात कर रहे हैं खाना कहाँ से आएगा तो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है कि क्या हमें कंप्लीटली मिलेट पे आना चाहिए क्या हम इसको बैलेंस कर सकते हैं तो प्रॉब्ली उस पर भी थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ ध्यान डाला है रिपोर्ट के ऊपर और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वी हैव अ 2 बिलियन प्लस अपॉर्चुनिटी इन मिलेट्स तो अगर 2 बिलियन USD का अपॉर्चुनिटी है तो इंडिया इज इन द बेस्ट टाइम एट द बेस्ट स्टेज टू काइंड ऑफ अ टैप दैट अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे इस टाइम में अगर हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया देन प्रॉब्ली इट विल वेरी चैलेंजिंग फॉर अस टू बी इन दैट मोड Again, coming back, if you look at the last 5-6 year activities from government side, lot of work has been done. And even if our foreign minister is going and hosting lunch at UN and millet is one of the menu, वो दिखाता है कि मतलब what is the kind of importance we are giving to millets. And probably before I end my speech, probably this is a time where India can use even millets as a part of their soft power diplomacy. कल हमने सबने नोटिस किया होगा कि चंद्रयान के लिए everybody was quite happy and probably millets can also become one of the jewel in our soft power push for the world. So on that note, I end my speech and probably I'll not close without thanking FICCI, an organizer, to kind of a millet in your state, Karnataka. Yeah. We are number 1 in minor millets and How much in tons millet tons? it's increasing. I mean, it's 4 times more because every day. No, sir, that's not the issue. Issue all over India, in about 40 million hectares. Punjab produces more, can produce more millet. In just 4 million hectares. So we are not considering maize as a millet, as a nutritious food. Maize is grown all over the world. Its yield is 10 tons in about 3-4 months. This is
So we have to give awards to the startups and they're waiting. So next session, we are Next going to session talk we will about discuss our this. So we'll take it up at that time. May I also request Mr. Jitendra Joshi, Chairman, FICCI Task Force on Mills, to join everyone on the ISA. Ma'am. First runner-up in this category is Minkan Agro Industries Private Limited. May I request Sir. second runner-up in this category is Harbo Mill Neutralize. May I request representative from the second award category is Millet Startup and Ready for Market Stage. Acknowledging and supporting Sir. first runner-up in this category is HW Wellness Solutions Private Limited. True Elements. May I second runner-up in this category. Sir. So pivotal to entire nation. With these words, I would like to give a special thanks to millet farmers who have joined us today. A special certificate of thanks to them for joining us today. फिक्की में हम हमेशा ही किसानों को प्राथमिकता देते हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान से ही हमारे राष्ट्र की प्रगति का आधार तैयार होता है। वे हमारे देश का समृद्धि की मूलभूत स्तंभ हैं। और मैं सारे किसान भाइयों का अनुरोध श्री आनंद कुमार, For me. Yes, and this is also for you. Thank you. Sir. So take it. Thank you. Thank you so much. That's good. Of course. So I start from one corner. Yeah. You're supposed to carry this. You're supposed to carry this. आपका लास्ट होगा. Thank you, sir. Rajiv, let's see them. So they will ask for photograph. may I also request Mr. Chair. मैं आपको देता हूँ. Thank you. May I also request Mr. Tia Keswan sir to give a gift hamper to Shree Chandra Chaudhary, who is among us. So please join us on the dais, please. Oh. आइए. It's an honor to have you here. Yeah, I know. Odisha government has released my book. Sir, please. Thank you. True elements. Excellent, sir. चलो भाई. Thank you. Thank you. Thank you. For his continuous support. Please. Thank you. Thoughts, please. I request all the dignitaries to sit on the dais and take a seat. Thank you, Neera. Things are well established now that how important millet is for all of us, for the people on this planet, to make sure that they are prospered, not only with the money, but with the health as well. Just wanted to thank, with the point that, thank FICCI to conceptualize this task force on millet.
last year somewhere in September we initiated this. I'm very, very happy to say that now we are completing 1 year. 1 full year of a lot of engagement, a lot of discussion, a lot of people coming together, almost all the stakeholders. We have representation from farmers, farming body, FPOs, different agencies working with farmer, to startups who are having innovative thoughts about the product. How can we make millet mainstream with the right kind of taste, right kind of texture, or something which current generation like. We also have people who are in the processing of millet at a much larger scale, like malt and everything, who are a big consumer. We have task force members who are representing big conglomerate like ITC, Amazon, Hindustan Lever, Marico and all. So a very well-rounded task force, I would say. And with the representation of almost every stakeholder, ensure that we remained on our path. Needless to mention the way PwC has contributed to the overall knowledge report and the different engagement with the state governments we had for state specific subjects also. The roadmap for Rajasthan has been part of our journey in this millet task force. And a lot of activities around, a lot of discussion on how we can improve our awareness for the consumer, improve the capability on exports, promote and encourage new startups to come with new things, and how we can give a platform to each and every voice for millet, because that is something which is the future, that is something which is here to stay, and that is something which is to benefit us all. I request Mr. Kaushal Jaiswal, co-chairman of the FICCI National Agriculture Committee and managing director of Fabulous Irrigation India Private Limited, to kindly step forward and deliver the vote of thanks, marking the conclusion of this inaugural session. Over to you, sir. And the industry leaders. That's no doubt that signifies what the millet is and how sustainable it can be and how good it can be for the human consumption, human health and everything. And first and foremost thing, I really want to express my sincere gratitude and thanks to our millet expert, Dr. Khader Wali, who left for another meeting, but hearing him and hearing his views on that was an eye-opener for me at least, and I am pretty sure it has enhanced your knowledge base also. So thank you, Dr. Khader Wali, for coming to this conference and enlightening us with your thoughts and your knowledge. I also want to thank the governments, particularly the state government of Odisha, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, those who have contributed and the partners in this event. Unfortunately, our minister could not come due to his engagement, but my sincere thanks and gratitude to him for his support. My sincere gratitude and support for the Minister of Agriculture Uttar Pradesh, Shree Shahi, who could not make it to the event. And also I want to extend my thanks to FICCI Chair on Agriculture Committee, my colleague Mr. Keshwar. I really want to extend my sincere thanks to Mr. Ranveer Barar, who could not attend in person, but he took time out to address us and leave his thoughts from Dubai or online. My sincere thanks to my industry colleagues, Mr. Ravindra Baryan, who has come all the way from the Singapore to address this issue conference. And I would like to express my sincere gratitude to Mr. Shashikant Singh, partner PwC India, for his address and for releasing a knowledge paper on the millets. Congratulations to the FICCI Task Force on Millet, led by Mr. Jitendra Joshi. They have done a wonderful job, and congratulations for completing 1 year as a task force. So, very happy.
and my sincere thanks to organizers, entire FICCI team, and all the audience. Thank you very much. The session of the FICCI Conclave. Before we conclude, I would like to remind everyone that we will now begin with our first plenary session. So I kindly request everyone to remain seated in their respective seats. We hope that this conclave will result in actionable recommendations and partnerships to promote millets. Thank you, Mr. ओवरऑल हम ये मानते हैं कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा ताकि आम आदमी के खाने बेहतर रहें। मिलेट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे आधुनिक भारत में अभी कुछ समय पहले की बात देखते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं मैगी पास्ता इसकी तरफ भागते हैं और यदि हम जाते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, ग्रामीण एरिया की तरफ, तो कहीं ना कहीं पाते हैं आज भी वहाँ स्वस्थ हैं, आज भी वहाँ हेल्दी पीपल रह रहे हैं क्योंकि उनका जो है वो जो उपज कर रहे हैं वही वो खा रहे हैं। हम मोटे अनाज की बात करते हैं, कई सारी बीमारियों से हमें बचा रहा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसके साथ हूँ। जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ के किसानों को तो आपने कैनाल बना दिया, ये बना दिया, ये सारी चीजें दे दी, दे आर गेटिंग बेनिफिट। मोस्ट ऑफ द एरियाज में इसका एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो गया एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। आई एम नॉट सो क्रिटिकल लाइक खादरवल्ली जी was in the morning, but because everything has a time, that time there might be a requirement of कि हमारे पास फूड नहीं था, नहीं तो लोग खाने से ही मर जाते, तो कम से कम चावल तो खा ले। But now this situation is not there. So what Kishwan ji was saying कि एक moderate view लेके चलना है। So these areas के farmer के लिए this is millet mission is also given an equity kind of thing. Odisha is only state which procures millet on MSP. Ragi, because 90-95% of our production is finger millet. We procure on MSP and we also distribute again in the PDS, not in lieu of rice or wheat, but in addition to rice or wheat. हम उसको additional देते भी because there are health related issues also in these tribal areas. It is not that कि वो इसको grow करें, हम उसको MSP में procure कर लें and distribute करें और अलग जगह पे. So there तो ये एक conscious decision था. It is not कि this was not debated and decided. ये बहुत debate भी किया गया कि अगर हम खरीद रहे हैं तो फिर क्यों ले buy करें. आप देखेंगे कि जितने हेल्थ रिलेटेड डेटा आते हैं जिसमें जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो ये रिलेटेड, अगर आप इसको मैप करेंगे तो यू विल फाइंड कि these tribal areas are also having health related issues. तो ये एक डिसीजन हुआ, ये दोनों डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और because of these such decision Odisha Millet Mission has been recognized by almost everyone. नीति आयोग ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला है कि उड़ीसा मिलेट मिशन को अदर स्टेट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए, इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी ऑफिशियली बोला है कि उड़ीसा मिलेट मिशन साउथ अफ्रीकन कंट्री जहां पे स्पेशली मिलेट्स और ज्यादा होते हैं, दे शुड आल्सो लर्न फ्रॉम उड़ीसा मिलेट मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच महेश जी हैं। यहाँ एक फिक्की में मिलेट को लेके एक प्रोग्राम चला हुआ है जिसमें महेश जी ने भाग लिया और इनको जो है सम्मानित भी किया गया स्टेज में। तो आइए महेश जी से मिलते हैं हम। एग्रो जी कंपनी के नाम से जो है इनका कंपनी का नाम है और दिल्ली में इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो महेश जी नमस्कार। 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 तो बताएं अपने दर्शकों के लिए। यस, हम लोग एग्रोजी कंपनी से है। तो हम लोग मिलेट जो अभी जो श्री अन्न उसको कह रहे हैं, तो उसके जो अलग अलग हम लोग वैल्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे लड्डूज़ है, कुकीज़ है, या जो आपको 5 जो श्री धान्य हैं तो वो भी आपको हमारे पास है, वो आपको मिल जाएंगे। और मेरे साथ अभी वंदना जी है, उनके हस्बैंड है, वही हमारे यहाँ पे दिल्ली में देखते हैं। आप किसी को मिलेट्स या चाहिए, मिलेट्स ग्रेन चाहिए या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाहिए तो आप दिल्ली में आप खरीद सकते हैं इनके साथ। और हम लोग सब गरीब फार्मर के साथ भी काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। वहाँ से हम लोग ये मिलेट्स खरीद रहे हैं फार्मर से। और हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे में,
वहाँ पे ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स सब, तो वो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। करीबन 75 प्रोडक्ट है मिलेट बेस्ड, और वो सभी प्रोडक्ट आपको सब नेचुरल है, उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं यूज़ किया है, और प्रोसेस भी बहुत नेचुरल है। उसमें कई तरह का 100% आपको प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। शुगर फ्री भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और ये सब मिलेट्स है। मिलेट्स काफ़ी अच्छा आपकी सेहत के लिए अच्छा है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। मिलेट्स में फिर जो 5 श्री धान्य हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। वो आप सब प्रोडक्ट आपको दिल्ली में ही है, वंदना जी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल्स मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। फूड को लेके जो है मिनिस्ट्री भी खुद इसमें सक्रिय है, और मोदी जी जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष स्वस्थ बना रहे। तो वंदना जी, आप कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर दिल्ली में जो आपका आउटलेट है उनमें कितना अभी लोग जो हैं आना शुरू हुए हैं, और लोगों का रुझान क्या इस तरफ हो रहा है? सर, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं पंजाबी बाग बेस्ड हूँ, तो पंजाबी बाग की महिला मंडल की ग्रुप मीना गुप्ता जी के अंडर में हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी लोग इतनी जल्दी उनका रुझान नहीं है मिलेट्स की तरफ, क्योंकि उनको जो है पिज़्ज़ा बर्गर खाते खाते जो है उनके डीएनए में चला गया हाँ है। जी, हाँ जी, तो इसको लाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, लेकिन अगर लोग जागरूक होंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी, ये खास बात है। हाँ, मैंने कोशिश करी है, मैंने उनको मिलेट से शेक बना के पिलाए हैं, उनको बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन उनको ये मेहनत करना कि मिलेट्स को पहले सोक करना, फिर उसको बॉईल करके बनाना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दिल्ली का जिस भाग में मैं रहती हूँ, ऑल ओवर दिल्ली में मैं इसको और आगे तक लेके जाऊँ। बहुत अच्छी बात है, ताकि जो है लोग जागरूक हो। सर जी, आप भी कुछ कहेंगे तो शब्द? चलो ठीक है सर, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आप सक्रिय हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे हैं फर्स्ट मेक यू टेस्ट माई, मीठा से ही शुरू करना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट मीठा। दिस इज वी कॉल इट जैगरी चांग, बेसिकली मिलेट पीनट, मिलेट में भी हम रागी यूज करते हैं, रागी पीनट एंड जैगरी पफ्ड एयर फ्राइड। सो हाँ, और इसको हम आगे जा करके अभी वी आर वर्किंग ऑन इट। Yes, yes. And with this chocolate dip, we are coming up with a chip and dip kind of concept for kids. And then we have trying to give you something to on the tunes of Kinder Joy. पर मेरे पास ये 4 पीस जो देख रहा हूँ चॉकलेट है, मतलब चॉकलेट नहीं, वो तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेजरली हम रागी से
तो पलक जी, ये जो फिक्की में प्रोग्राम चला हुआ है मिलेट को लेके, और आप कह रही हैं कि स्टार्टअप आप कर रहे हैं इससे, तो क्या आप आने वाला जो हमारा भविष्य है बच्चों का, उनको लेके कितना सक्रिय हैं और किस तरह से आप सोचती हैं इस फूड को लेके? सर, जो मिलेट्स है, श्री अन्न है, वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और उसको किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसको सोक करके और अगर स्प्राउट करते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बच्चों की डाइट में उसको अगर हम स्टार्टिंग से ही इंक्लूड करें, जैसे साउथ में अंकुरित करके रागी दी जाती है, विच इज़ द फर्स्ट फूड, वीनिंग फूड कहा जाता है उसको। अगर हम नॉर्थ में भी और पूरे इंडिया में उसको अपनाने की कोशिश करें तो वापस से हम मिलेट को बच्चों की डाइट में बहुत आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि एक फिट और हेल्दी इंडिया की तरफ हम जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। That's very good. IT field, I think.